Student, this is the code written in C++. I will create a flowchart and algorithm from this code. These are the variable that I have taken, like customer account number input and customer name, month name, year, and consumed units. Okay, I will take as an input in flowchart. See here, I have start my flowchart with oval shape, that is a start symbol. This is the start symbol, and after this I have taken variable name, account number, name, month, year, and units. And you know that this symbol is used for as an input. Even you cannot write, read, or input. This symbol shows that this is input and output. Next. And same way I have taken the electricity bill calculation, input, customer account, customer name, month, name, year, and consumed unit. And what will be the output? They will display this information. They will display the charge, gross amount, surcharge, costs, and net amount. In the code, next is if statement. If statement, अब देखिए यहाँ पे कंज्यूम यूनिट चेक हो रही है 200 से लेस, मीन्स के 200 इसमें ऐड नहीं है, लेस देन 200 तक मीन्स के इक्वल टू 199 तक। अगर इससे लेस हो तो चार्ज क्या करना चाहिए 3.5 के लिहाज से। अगर यूनिट आपके 200 से ज्यादा है और इक्वल टू 200 है और लेस देन 400 यूनिट है यानी 399, तो चार्ज क्या होना चाहिए 4.7.5 के लिहाज से, 4.75 के लिहाज से चार्ज करना चाहिए। तीसरी कंडीशन इसमें दी गई है कि अगर वो लेस देन 600 हो यानी कि 599 तक यूनिट्स हो तो यूनिट की पर कॉस्ट चार्ज क्या होगा 6.30 होगा। और इसके अलावा बाकी अगर 600 हो या 600 से ज्यादा हो तो इसका चार्ज रेट ये आना चाहिए। तो इसके लिहाज से मैं क्या करने लगा हूं, चार्ज रेट वहां पे कैलकुलेट करने लगा हूं, और जो भी चार्ज रेट आएगा मे बी दे विल कम फ्रॉम दिस प्लेस, this place, this place, or this place. They must be multiplied by consumed unit. Okay, and it will store into G underscore amount, gross amount. अब यहां पे हम फ्लो चार्ट में देखते हैं कि अगर यूनिट लेस देन 200 तक हुए, 200 से लेस देन मीन के 200 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 199 इज द लास्ट, देन तो चार्ज के पास वैल्यू आएगी दैट इज 3.50। तो यहां से फिर ये क्या करेगा कि यहां पे आ जाएगा, यहां पे कैलकुलेट करने के लिए यहां से यस के केस में ये मूव करता हुआ नीचे आएगा और वैल्यू को कैलकुलेट करेगा ग्रॉस अमाउंट को। कैसे? यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेगा चार्ज के लिहाज से, और चार्ज के पास वैल्यू कौन सी मिली 3.50। अगर ये 200 से ज्यादा हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सपोज 350 हुए, तो 350 के लिए यस तो नहीं होगा, फिर वो नो की तरफ आएगा, और नो में देखिए 350 लेस देन 400, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इस केस में चार्ज विल गेट द वैल्यू 4.75 एंड विल रीच टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज यूनिट्स टाइम्स चार्ज। ओके, अब अगर सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें मैं कहता हूं 450, जब मैं 450 लिखूंगा तो ये तो फॉल्स हो जाएंगे, यानी कि 450 लेस देन 400 नहीं है, तो फिर नो की तरफ जाएगा। अब नो में क्या होगा, चेक करेगा कि 450 सपोज लेस देन 600 है, तो ये ट्रू है, तो यस में जाएगा। यस के केस में क्या करेगा कि चार्ज विल गेट वैल्यू 6.30, और इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा दैट इज जी अंडरस्कोर अमाउंट इक्वल टू यूनिट टाइम चार्ज है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होगी कंडीशन, यानी कि अगर उसके पास 700 आप यूनिट्स हो
तो ये फर्स्ट कंडीशन भी नहीं ट्रू होगी, सेकंड भी नहीं होगी, थर्ड भी नहीं होगी, तो फिर फोर्थ में क्या करेगा, चार्ज को वैल्यू मिल जाएगी 7.90 और ये किससे मिलेगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 600 के लिए। अगर 600 हो गए तो भी चार्ज 7.90 वैल्यू गेट करेगा। ठीक है, इसके बाद जी अंडरस्कोर अमाउंट इक्वल टू यूनिट टाइम चार्ज के पास आ जाएगा। क्लियर। अब हम एल्गोरिदम को देख लेते हैं। सेम वे आई हैव रिटन द एल्गोरिदम, if consume unit less than 200 then charge will get 350, if not then we'll go to else. In else they will check that if units is means less than equal to consume unit less than equal to 400 mean greater than equal to or less than 400 then charge should be 4.75. Else if it is 400 or less than 600 then charge should be 6.30, else charge should be 7.90. So next is, after calculating this statement, next is if gross amount greater than 1000 then what happen, gross amount time 5 divided by 100, then they will store into surcharge. Okay, if it is more than, we will apply another condition. Same way we have written that after this we will move this symbol and g underscore amount greater than equal to greater than 1000, then you will surcharge equal to 5% of gross amount. Yes, otherwise they will move to surcharge equal to 0. And after this they will move to the next statement from this point, or if they are coming from this point they will move to this point, means this point. Next statement is here. From surcharge equal to 5%, then they will calculate co underscore cess 2% of the gross amount. As you can see that they will calculate 2% of the gross amount and they will store into co underscore cess. And then net amount they will calculate gross amount surcharge plus co underscore cess. Same way we have written that net amount they will get about gross amount plus surcharge plus co cess. Okay, and in algorithm also we are calculating the gross amount like units time charge, and after this we're writing here if gross amount greater than 1000 then 5%, otherwise surcharge will get 0. And then cost as equal to 2%, 0.02 times g underscore amount. Next is they can check that if net amount less than 100 then net amount will be equal to 100, and after this they will display all the values. Clear. And after this finish. Okay, same way we will go to the flow. Okay, you can see that if net amount less than 100 then what happen, you will get net amount equal to 100 and display bill. Otherwise how they are calculating the amount, they will display here all the bill details. Okay, and after this it will goes to the endpoint. If you will go to algorithm, they are calculating the net amount, gross amount plus surcharge plus co underscore cess. And after this they are checking if net amount less than 100 then net amount equal to 100. And at the last print bill details like customer number, customer name, month, year, consume unit, charge, gross amount, surcharge, cost cess, and net amount. They will display there all. Okay. This is a complete algorithm and flowchart. You can see this is a flowchart.
Complete flowchart is here. Okay, and here you can see the full program. Okay, when I will run this, I will show you the output. I'm going to run the program, execute, compile, and run. Okay, customer account number 101, customer name Ahmed, years 2025. Sorry, month name, it will be any month name, and year should be 2025. Enter the unit consumed 700, and they are showing me detail like this. Customer account number is this, customer name is Ahmed, month name by mistakenly I have entered 2025, years 2025, consumed unit is 700, amount charges is this amount, and surcharge amount is this, cost cess is this, and net amount is 5,917. Okay, this is the complete program with the algorithm and flowchart.